हेलो दोस्तों, वेलकम टू शालीन स्वाद स्वीट। आज हम आपके लिए बनाएंगे स्वादिष्ट और जल्द से बनने वाली वेजिटेबल खिचड़ी। आइए इसे कैसे बनाने वो आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप चावल लिया है, आप कोई भी राइस ले सकते हैं। आधा कप मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है और आधा कप यहाँ पे मैंने बिना छिलके वाली मसूर की दाल ली है। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 3 से 4 बार आपको वॉश कर देना ताकि इसका जो भी गंदा पानी है वो निकल जाए। ये ध्यान रखें कि पानी सारा निकल जाना चाहिए। अगर आपको चावल में खिचड़ी बनानी है तो आपको आधे घंटे गर्म पानी में डाल के रखें, वरना आप अराउंड 3 से 4 घंटे चावल दाल में डाल के रख सकते हैं। कुकर लेके आए, इसमें 2 चम्मच घी डाला है और घी जैसे पीला वैसे हमने तेल ताकि हमारे छिलके देने और इसमें हमने डाला 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते डाल दिए। जैसे ये हल्का तड़क जाता है यहाँ पे 2 प्याज डाल दिए बारीक और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और 2 हरी मिर्च बारीक कटी। और सॉटे करना है जैसे ये हो गया नमक डाल दिए बारीक कटे हुए और नमक डाल के इसे भी कुक करना है। देख सकते हैं हमारी सब्जी कुक हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिए गाजर, आलू, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल के इसे और कुक कर दिया। कटोरी चावल लिया है और आधे कटोरी दूध डाल दिया। एक्चुअली हमें 6 कप पानी डालना था लेकिन 4 कप डालना है, वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। मैं डाल रहा हूँ अभी हमने 4 कप गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी से ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म ना हो जाए, वो कंटिन्यू रहे, इसलिए हमने 4 कप गर्म पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है नमक डाल के। आखिर मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कुकर ठंडा हो गया और हमने कुकर ओपन कर देना। देख सकते हैं हमारी खिचड़ी कितनी अच्छी बनी।